Hello everyone. So today I'm going to discuss about this revolved boss base and this feature revolved cut in SolidWorks. Now I'll just make this clear that this video is going to cover the topics that are meant for beginners, the people who want to learn how revolved base boss base works and what are the all the tabs inside the command. Okay, so first of all, we'll just start off with the front plane and draw any figure. I'll start with the center line first of all. I'll be making this center line. Another way to make a center line is just to draw a normal line and select it and press Alt plus C. It's going to convert to a center line. Also true for vice versa. Now, what I'll do is, let's say I draw a couple of lines here to make a rectangle. Now you can say that this is a cross section of something that I'm imagining right now. That is an empty cylinder. So if I want to make an empty cylinder out of this, I'm not giving it any dimensions as of now, just to demonstrate the feature. I'll go to the features tab, I'll select revolved boss base. As you can see, since I made the center line, SolidWorks has already selected the center line for me. If this was not a center line, if this was a normal line and it did not exist there, it was merged with the feature itself, then SolidWorks would not know what to do. I'll just show you an example of that. Let's delete this from here. Now it does not know what to do. I'll select the axis of revolution as this little line. Now you can see how the feature has changed. It has rotated this little rectangle along this center line to make this disc, but since that is not what we want, I'll just go ahead and select the center line again. So right now I have this. Okay, now there under this direction 1 tab, there are many options. Blind means like through wall, and I can give a degree to blind here. This is 360 degrees, like one. It means one full rotation. If I put 180, and this is going to come half. If I write 45, then I will get this much of a sector. So let's start with 360. Okay, the second one is up to vertex, then up to surface, offset from surface, or midplane. So now these three up to vertex, up to surface, and offset from surface will be used when we have other features in our body. Right now we are only having a sketch, so I cannot demonstrate that. That will be used when you want to give a reference to another point in the body कि हाँ हमें इस edge तक का rotation चाहिए. That's all. So वहाँ पे इस तरह ये तीनों features काम आएंगे. Offset में क्या होता है, तुम इस पर्टिकुलर लाइन 0 पॉइंट से स्टार्ट करने के बजाय थोड़ा आगे से स्टार्ट करोगे एंड यू कैन डिफाइन दैट कि कितनी आगे से स्टार्ट करना है. दिस इज समथिंग यूजफुल. मिड प्लेन तो अभी 360 डिग्री में यू वोंट सी द डिफरेंस, बट डू यू रिमेंबर when I made 180 degrees, so it came like this. Now if I do 180 degrees, see what happens. You see, now this the plane which I drew the rectangle on became the mid plane. Okay, and when I entered 180, so it drew 90 degrees on either sides of it. So that is why it's coming like this. If I change it to 45 again, then you can see 22.5 degrees on either side. This is what mid plane does. Okay, I'll again change it to 360. Then comes thin feature. Now thin feature is something different. As you see, as I selected thin feature here, so there is now three layers basically, three layers of this cylinder. Now why is this happening? Thin feature says that no, we want material to be added on either side of it. Suppose if this was not a closed rectangle, if I drew a single line and I wanted to revolve that, then SolidWorks would automatically consider it as a thin feature. कि हाँ we don't have a sketch, but हम इसके either side पे material add कर देंगे and उसको हम revolve कर देंगे. So यहाँ पे उस material जो add हो रहा है उसकी width हम change कर सकते हैं. Suppose I say 2. Now you can see सेंटर वाला जो
सिलेंडर था उसकी विथ तो उतनी ही रही जितना ड्राइंग में थी, बट ऑन आइदर साइड का जो मटेरियल था वो कम हो गया। अगर हम इसको बढ़ा के 30 कर दें देन यू कैन सी अब ये इतना अंदर तक आ गया है। सो दैट इज़ व्हाट थिन फीचर डज। थिन फीचर के बारे में और ट्यूटोरियल्स अगर देने हैं, सेपरेटली डिमॉन्स्ट्रेट करना है, देन आई विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ इंटरनेट दैट इन द कमेंट्स। सो आई टर्न इट ऑफ। दिस इज़ समथिंग सेलेक्टेड कॉन्टूर्स। लेट्स से हमारे स्केच में ये अभी एक पूरा सिंगल एरिया है, अगर ये ना होता आई शो यू। लेट्स गो टू अ लाइन and I'll make one more line here. So now my sketch is divided into two parts. Now if I go to revolve boss base, SolidWorks will not know what to do. And see यहाँ पे इसने thin feature खुद से select करा है because यहाँ पे एक area नहीं है. So first of all I'll turn it off. And इसको access तो पता थी क्योंकि center line है, but contour नहीं पता था इसलिए इसने open करके खुद से दिया है. So that is what we'll do. Suppose हम एक को select करते हैं, then see इसने half ही करा बिकॉज अब वो स्केच एक लाइन से डिवाइड हो गया है। दोनों सेलेक्ट करेंगे तो पूरा हो जाएगा। नाउ देयर आर ऑल्सो दिस समथिंग कॉल्ड डायरेक्शन 2। क्या होता है, हमने जैसे मिड प्लेन दिखाया कि उसने स्केच वाले प्लेन को मिड प्लेन मान के आइदर साइड पर ड्रॉ करने लग गया, बट सपोज इफ़ यू वांट समथिंग अनईक्वल तो क्या होगा, एक डायरेक्शन में हम एक रोटेशन ले लेते हैं, लेट्स से 45 डिग्रीज। ओके, नाउ हम डायरेक्शन 2 भी सेलेक्ट कर लेंगे एंड अभी तो इसने बाई डिफ़ॉल्ट 45 डाल दिया है, बट अब इस कंडीशन के अंडर हम इसमें अनईक्वल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। लेट्स से आई वांट 90 डिग्रीज ईयर, तो डायरेक्शन 2 में 90 डिग्रीज आ जाएगा एंड डायरेक्शन 1 में 45। उसके हिसाब से हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएंगे। लेट्स से आई वांट 135 ईयर, तो अब मेरा सेक्टर ऐसा बन गया है। ओके, राइट नाउ आई जस्ट टर्न इट ऑफ एंड एंटर 360 अगेन। So now we have this cylinder. Great. Now I'm going to demonstrate revolved cut. So revolved cut के लिए भी हमें एक figure चाहिए. Let's go to the front plane again and sketch. अब यहाँ पे what I want is I'll draw a little lip sort of a thing. So yeah, I'll go to line and I'll be closing this feature now. I'll go to features, revolved cut. अभी उसके पास contour मिल गया है, then it will select it automatically and you can see ये इसको cut कर देगा. Now ये 360 degrees में कर रहा है, I can change it. I just want it to be 270 degrees. यहाँ पर भी वही सारे features हैं and it's going to work exactly the same as I told you for boss base. टेक करेंगे तो लेट्स सी इसने 270 डिग्रीज का एक रिवॉल्व कट बना दिया है। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट द रिवॉल्व फीचर्स, द रिवॉल्व बॉस बेस एंड द रिवॉल्व कट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और यू वांट मी टू एक्सप्लेन फर्दर about something, or if you're facing any difficulty in any of the model you are drawing, please comment down in the comment section and I'll try my best to solve that problem for you. Thank you.